Assalamu alaikum. Welcome to the next unit of Lecture 1 of Database Management Systems. We will discuss file-based approach versus database approach. Although the file-based approach is largely obsolete, there are good reasons for studying it. We need to understand the problems inherent in file-based systems, which will help us from repeating these problems in database systems. Understanding how the file system works will be extremely useful if you wish to convert a file-based system to a database system. Now, what is file-based system? It is a collection of application programs that perform services for the end users, such as the production of reports. Each program defines and manages its own data. File-based systems were an early attempt to computerize the manual filing system that we are all familiar with. For example, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर एक कोर्स के कितने सेक्शंस हैं या एक सेक्शन में कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके असेसमेंट्स में मार्क्स कितने हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, टास्क, क्लाइंट और एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मैनुअल फाइल्स के थ्रू स्टोर्ड है, एंड फॉर सेफ्टी they are labeled and stored in one or more cabinets. Now, when we need to look up something, we go to the filing system and search through the system, starting from the very first entry until we find what we want. Alternatively, अगर हमारे पास एक indexing system हो जो हमें help करे to locate what we want more quickly. For example, we may have divisions in the filing system or separate folders for different types of items that are in some way logically related. अब manual filing system अच्छा काम करता है जब the number of items to be stored is small, मतलब कम हो, और अगर ज़्यादा number of items को सिर्फ store और retrieve करना है, तब भी it works well. However, manual filing system break down हो जाएगा जब हमें cross reference और process करनी हो information in the files. To explain this, the example given in the book is of a typical real estate agency's database named Dream Home. This real estate agency has 5 departments, namely Data Processing Department, Sales Department, Contracts Department, Payroll Department, and Personnel Department. Now, let me brief you one by one about each of them. Each department stores and controls its own data with the assistance of data processing DP staff. Sales department का काम है प्रॉपर्टीज की सेलिंग एंड रेंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब एक क्लाइंट सेल्स डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर्टी फॉर रेंट की मार्केटिंग के लिए आता है, एक फॉर्म कंप्लीट किया जाता है, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं. इसमें डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, सच एज एड्रेस एंड नंबर ऑफ रूम्स, टुगेदर विद द ओनर्स डिटेल्स. सेल्स डिपार्टमेंट्स, ये देख रहे हैं, ये वाली फर्स्ट फिगर, इसकी बात कर रही हूँ. स्लाइड आगे नहीं होती हमारे पास. इसमें डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, सच एज एड्रेस एंड नंबर ऑफ रूम्स, टुगेदर विद द ओनर डिटेल्स. सेल्स डिपार्टमेंट क्लाइंट की इंक्वायरीज भी, मतलब जो भी इंक्वायरीज होती हैं वो भी हैंडल करता है, और उसके लिए ये सेकंड फिगर में मौजूद फॉर्म कंप्लीट किया जाता है. ये जो आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, ये वाला.
With the assistance of the data processing staff department, जो data processing का है, sales department create करता है एक information system to handle the renting of property. So the system consists of 3 files containing property, owner and client details, जो कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ये वाली फिगर. To make it simpler, we omit details relating to members of staff, branch offices, and business owners. अब कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टीज फॉर रेंट के लीज एग्रीमेंट्स को हैंडल करने के लिए. जब भी क्लाइंट एग्री करता है टू रेंट अ प्रॉपर्टी, तो फॉर्म फिल किया जाता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्म है, by one of the sales staff giving the client and property details, client की और property की details. फिर इस फॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट को पास किया जाता है, जो इसे एक लीज नंबर एलोकेट करता है और पेमेंट और रेंटल पीरियड डिटेल्स को कंप्लीट करता है. अगेन विद द असिस्टेंस ऑफ द डीपी डिपार्टमेंट, जो डेटा प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट क्रिएट करता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल लीज एग्रीमेंट्स. The system consists of 3 files storing lease, property, and client details containing similar data to that held by the sales department, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. Nowadays, clients, senior managers, and staff want more and more information. In some areas, there is a legal requirement to produce detailed monthly, quarterly, and annual reports. Clearly, जो manual system है, वो inadequate है for this type of work. File-based system को develop किया गया in response to the needs of industry for more efficient data access. However, rather than establish a centralized store for the organization's operational data, a decentralized approach was taken. जो हमने अभी बात की कि हर डिपार्टमेंट डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ की असिस्टेंस से अपना डेटा को स्टोर और कंट्रोल करेगा. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच. अब अगर आप इस फिगर को देखें, ये जो आपके सामने है फिगर 1.5, ये शो कर रही है कि हर डिपार्टमेंट एक्सेस करता है अपनी फाइल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, जो कि स्पेशली उसी के लिए बनाई गई हैं. हर सेट डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का हैंडल करता है डेटा एंट्री, फाइल मेंटेनेंस एंड द जनरेशन ऑफ अ फिक्स्ड सेट ऑफ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो फिजिकल स्ट्रक्चर और स्टोरेज है ऑफ द डेटा फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, वो डिफाइंड है एप्लीकेशन कोड में. We can find similar examples in other departments also. For example, the payroll department stores details relating to each member of staff salary, namely staff salary में हमारे पास हैं staff number, first name, last name, gender, salary, branch number. पर्सनल डिपार्टमेंट भी स्टाफ की डिटेल स्टोर कर रहा है, नेमली स्टाफ में हमारे पास क्या है, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच नंबर. तो स्टाफ सैलरी और स्टाफ में आप देख सकते हैं स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मजीद कॉलम्स भी हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, सेम है, सिमिलर है. It can be seen quite clearly that there is a significant amount of duplication of data in these departments, and this is generally true for of file-based systems. So, a file is simply a collection of records which contains logically related data.
अगर हम इधर आए वापस पीछे, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल हेयर कंटेन्स 6 रिकॉर्ड्स, हर एक प्रॉपर्टी के लिए। हर रिकॉर्ड में एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ फील्ड्स हैं जो कि लॉजिकली कनेक्टेड हैं। यहाँ हर फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है कुछ कैरेक्टरिस्टिक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की, कि जिसे मॉडल यहाँ पर किया गया है। यहाँ प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल में मौजूद फील्ड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सच एज एड्रेस है आपके पास प्रॉपर्टी की टाइप है और नंबर ऑफ रूम्स है। ठीक है।